हेलो एवरीवन। आज आशिर अजीम साहब हमारे फिक्शन बुक क्लब में मौजूद हैं। आशिर अजीम साहब राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं और सोशो पॉलिटिकल रिफॉर्मर भी हैं। आशिर अजीम सर का फेम 1994 के धुआं ड्रामे से स्टार्ट हुआ था, जो आशिर अजीम साहब ने खुद लिखा था। इनकी एक 2016 की मूवी मालिक यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। लिंक विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज चंद सवालात के साथ करते हैं। तो पहला सवाल इनसे यह है कि इन्होंने रिसेंटली थिंक सीरीज शुरू की है, जो कि वन ऑफ माय फेवरेट सीरीज है। वैसे तो इनका चैनल ही जबरदस्त है। तो इनसे जस्ट ये पूछते हैं कि हाउ टू मेक पीपल थिंक, व्हाट टू थिंक एंड हाउ टू थिंक, क्योंकि सोच तो हम हर वक्त रहे होते हैं, और हमें ये गाइड करें कि इनके गोल्स क्या हैं इनकी थिंक सीरीज के। जी सर। बहुत शुक्रिया जमशेद साहब, आपने मुझे इनवाइट किया। मेरा हमेशा से एक प्रॉब्लम ये रहा है कि धुआं डेज से भी जब भी मुझे कोई इनवाइट करता है किसी जगह पे एंड गिव्स मी दैट लाइमलाइट कि जी इसको आप काइंड ऑफ चेयर हैं या आप इसके चीफ गेस्ट हैं या आप लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, तो मैं हमेशा नर्वस होता हूँ। और इसलिए क्योंकि मैं कभी अपने आप को इस काबिल नहीं समझा। आई थिंक आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन and so I kind of feel awkward to to be on the pulpit. So thank you so much for having me here, and thank you everybody else who may be watching. Coming to your question, think. मेरा ख्याल ये है कि जी वो एक कोट है किसी की, I think that is why I am, and that is true. अब जो मेरी एग्जिस्टेंस है, जो आपकी एग्जिस्टेंस है, हम जो इंडिविजुअल्स हैं, हमारा जो जिंदगी का एक्सपीरियंस है, अगर वो आप अपने जहन से नहीं चल रहे तो बेसिकली आप जिंदा नहीं। you only exist, you're only living because you're a conscious being, and you have the capacity to think, which is your greatest gift. अगर हम इसको थोड़ा सा religiously भी देखें तो the gift, although I think that kind of narrows it down, but the gift to humankind as compared to other life forms was freedom. So freedom means the ability to choose. Now, how would you choose unless you think? And so, I think thinking is the most important thing. We do it all the time, but how to think analytically, correctly, critically, I think it is very, very important, because reminiscing या मतलब हम प्रीवियस याद करना या मेमोरीज जो हमारी होती हैं, जब मैं 5 साल का था तो ये हुआ, जब 10 साल का था तो ये हुआ, that's not thinking. That is remembering, that is recalling. Thinking is something which allows you to have all your previous experience, your current knowledge, and then be able to interpolate it and be able to predict the future, because your survival, the survival of your family, the people you care about, the people you love, will depend on your ability to be able to predict the future. It's like driving a car, as simple as that, or how we became the predominant species. Because अगर हम future predict कर सकते थे, अगर मैं एक जगह पे hunting gathering के days पे अगर मैं एक जगह पे हिरन के पाँव के निशान देख रहा हूँ एक डायरेक्शन में जाते हुए, तो my ability to interpolate कि अच्छा ये डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है तो आगे मुझे शिकार मिलेगा, which will bring me food. या मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो इतने डिस्टेंस पे आगे एक ऑब्जेक्ट है, अगर मैं एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि वहां पहुंच के मेरे साथ क्या होगा, तो obviously I'm going to crash. So thinking gives you that ability to be able to see into the future, hopefully to influence it, change it, so that it is better for you to survive, or at least be able to avoid something if you can't change it.
for yourself and for your family. So I think thinking is the most critical thing or the most essential thing that you can do. And if you're not good at it, well, it impacts everything around it. जी सर, वेरी वेल सेड। अच्छा सर, एक थोड़ा सा मेरी अपनी भी कंफ्यूजन दूर कर दें कि आप पब्लिक अवेयरनेस कर रहे हैं या कोई ओपिनियन बिल्ड कर रहे हैं, और उसकी पीछे क्या रीजन हो सकता है? नहीं, मैं ओपिनियन बिल्डिंग तो नहीं कर रहा, मैं तो एक ओके सो हाउ इट स्टार्ट्स इज सपोजिंग जब मैं फर्ज करें जो इस वक्त आपका एज ग्रुप है 18, 19 साल, 20 साल, 22 साल, तो ये जो अर्ली 20s के लोग हैं, मैं कभी ये सोचता हूँ कि जब मैं 20 साल का था तो काश उस वक्त कोई एक बंदा होता जो मुझे बताता कि यू नो तुझे किस तरह अनइमोशनल हो के क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, ताकि मेरी जिंदगी पे वो कितना ह्यूज इम्पैक्ट होता उसका। सो अगर मैं लोगों को अब वो थॉट्स दे सकता हूँ, आगे मानना ना मानना उनकी अपनी मर्जी है, if they don't agree with something, well, that's exactly what I want to do. I don't want them to accept what I'm saying. I want them to think, right? And then, come up with a logical reason saying, आपकी बात यहाँ तक ठीक लगती है, यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्यों है? And then not just me, then in their own lives. And I think why that is important is because when each one of us individually starts that process of logical thinking, the world improves for every one of us. Typical example इसका मैं इस तरह आपको देना चाहूंगा कि जब मेरी बेटी पैदा हुई, my first child was a daughter, now she's mashallah 24 years old. तो जब वो पैदा हुई तो पहली चीज थी कि जी बच्ची का नाम क्या रखें। I thought to myself कि जी हम जनरली खवातीन का नाम किस तरह रखते हैं, हम या तो उनके कोई हुस्न का एस्पेक्ट, कोई महजबीन, कोई महविश, कोई मतलब something which would talk about her beauty, or something about her piety, Maryam or something कि ये बड़ी religious है या pious है या खूबसूरत है इस्लाम। And I honestly sat down with myself and I thought, so this is a thinking process. How would I like to see my daughter in the future? Does it really mean much to me if she's the most pious person or something? Well, I said no, it didn't. Would it really matter to me if she was beautiful, the most beautiful woman on the planet? Well, and the answer came back to me, no. What do I want? I want a balanced human being with the capacity to think, unbiased, and be able to interact with the world as it is, right? So the first thing that I wanted to do was call her, give her something neutral. So I called her Aruj, and then that's just the first thing, naming somebody. Then starts the real struggle, how to raise such a child जो के किसी की नहीं सुनेगा, अपनी सुनेगा, right? जो किसी को जवाब दे नहीं होगा, अपने आप को जवाब दे होगा. Because answering to yourself is the most difficult thing on the planet. A lot of us, we don't want to take responsibility for our decisions, so we would say, अच्छा जी आपने ये कह दिया तो चले मैं ये कर लेता हूँ. लेकिन मेरी बेटी आज मेरी बिल्कुल नहीं सुनती. But we sit down and we have beautiful intellectual discussions, and she will convince me or she will be convinced, right? And it doesn't matter to her कि ये उसका बाप कह रहा है, ये उसका क्या कह रहा है, and I कभी मुझे बहुत गुस्सा आता है, seriously. But that's the idea. वो कौन सा रूमी नहीं है, that's this other person जिसने बहुत सारा लिखा है, and he says that
that children are like arrows and parents are like bows, right? और जितना कमान बो बेंड होता है उतना दूर तीर जाता है. So parents को जितना flexible होते हैं और वो कहते हैं your children are not your children, they are the children of life, you're just the gate through which that life flows. और अब अगर मैं अपने बच्चे में अपनी जिंदगी जीना चाह रहा हूं तो that is very unfair to my child. I must give them the wherewithal and everything to go and live their own life, whether it, maybe it doesn't even agree with me, but that's fine. That's the right they have, the right to choose. That's a right that has been granted to them, and I have no right to take it from them. You know? So, well, does that make sense? So I'm just trying to ask people to make up their own minds, not be slaves to anybody else's thinking, not be slaves to herd thinking, not be slaves to any other person's thinking, because you will only truly live if you can think for yourself. That's it. You know, when it's time to die, let us not discover that we never lived. That'll be such a shame. ये आपको एक ही दफा एक जिंदगी मिली थी, थोड़ी सी देर के लिए मिली थी और वो खत्म हो गई, और आपने जी नहीं, वो कोई और आपकी जिंदगी जी गई. So that's all I'm trying to do. I'm just asking people to think for yourself. Completely disagree with me, sure, I would love that, but at least you'll have a logical reason or at least you'll be able to answer to yourself. Yes sir, it makes sense. तो इसको अगर हल्का सा समराइज करने की कोशिश करें तो इट इज नॉट व्हाट यू थिंक, लेकिन ये जो हाउ टू थिंक है ना, ये इम्पोर्टेंट है. Yeah. और इस हाउ टू थिंक के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट भी होता है. तो इसको सेगवे करते हैं आपकी मालिक मूवी से. तो सर थोड़ा सा गाइड करें कि ये जो विजुअल मीडिया है, आपने पूरी मूवी बनाई, इसका पूरा एक प्रोसेस था, इसका अवेयरनेस में और लोगों को कंटेंट देना जिस पे उन्होंने सोचना खुद है, क्योंकि आपने पहले ही तय किया हुआ है कि आई वोंट टेल यू व्हाट टू थिंक बट हाउ टू थिंक. लेकिन हाउ टू थिंक के लिए आपने जो कंटेंट प्रोवाइड किया है, तो विजुअल मीडिया की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस पे बताइए कि किस तरीके से आप क्या इसमें सक्सेसफुल रहे और क्या आपको फीडबैक किस तरह का मिला. So first of all, there is the typical thing about Maalik कि जी लोग कहते हैं कि जी ये जो है आशिर साहब आपने एक फिल्म बनाई, आपको बड़ा नुकसान हुआ होगा, आपको बड़ा ये हुआ होगा वो. So I think if you measure a film by commercial success, so you're losing the entire point. Maalik to me was never about commercial success. I knew Maalik was not going to succeed commercially. It was written on the wall, and I can, and I'm smart enough to read that writing on the wall. Why? Because Maalik type की film, इस तरह की कोई भी film जो आप जो किसी जो issue based, subject based films होती हैं, इनको कोई commercial अदारा finance नहीं करना चाह रहा होता, ना sponsor करना चाह रहा. उसकी वजह यह है कि लोग, जो मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि लोग अपने आप को जवाबदेह नहीं होते, लोग बाकी लोगों को जवाबदेह होते हैं, और स्पेशली कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस. क्योंकि अगर मैंने कोक पेप्सी कोई एक ड्रिंक बेचनी है और मैं एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को फंड के साथ अपना नाम अटैच कर दूं, तो जो लोग उस कॉन्सेप्ट से डिसएग्री करेंगे वो मेरी प्रोडक्ट के खिलाफ हो जाएंगे. सो कमर्शियली तो सिर्फ वो चीजें सक्सेसफुल होती हैं जो कि neutral होती हैं, that really don't say anything because they don't want to create enemies, right? Maalik was a film which was bound to create enemies. It was known up front, and when we went to commercial organizations कि जी आप हमें फंड करें, फाइनेंस करें, या जो क्योंकि पाकिस्तान में आप फिल्म कमर्शियली वायबल है ही नहीं. हमारे पास टोटल उस वक्त, मुझे नहीं पता इस वक्त कितने सिनेमा स्क्रीन्स हैं, लेकिन उस वक्त हार्डली 100 के करीब स्क्रीन्स थे. और पाकिस्तान में व्यूअरशिप ऑफ अ फिल्म इतनी एक्सपेंसिव है कि आम आदमी नहीं देख सकता, क्योंकि वो सारे जो सिनेमाज हैं वो बड़े बड़े कमर्शियल मॉल्स में. उस वक्त टिकट मेरा ख्याल है कि 500-600 रुपए की उस वक्त टिकट होती थी, और यू पुट इन पॉपकॉर्न्स एंड ड्रिंक्स, सो इट वाज अबाउट 1000 रुपीस पर पर्सन. तो एक आम पाकिस्तानी तो अगर चार की फैमिली 4000 रुपए जाके फिल्म नहीं देख. सो पाकिस्तान में कमर्शियली तो सिनेमा वायबल नहीं है, नहीं था.
इंडिया हैज 14,000 सिनेमास और वहां पे एवरेज टिकट की प्राइस 50 रुपए थी, ठीक है। सो जो अमाउंट ऑफ जो 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 सिनेमा एज अ मीडियम की जो एक्सेसिबिलिटी इंडिया में है और जो कमर्शियल वायबिलिटी इंडिया में है वो ज़रा पाकिस्तान से कंपैरिजन। सो एक तो ये वाली साइड के जी क्या मालिक को कमर्शियली देख सकना चाहिए। आई थिंक मालिक वाज ट्रेमेंडसली सक्सेसफुल। Why was it tremendously successful? Because it was able to uh, to communicate what it wanted to say. That was the idea, right? To reach out to the people. Now, what is it that I wanted to say? I wanted to say that life is not a spectator sport. आप मेहमान बन के नहीं जिंदगी गुजार सकते यार, मुझे नहीं पता कोई कुछ और कर ही जाएगा और मतलब ये मुल्क जिस तरफ जा रहा है तो किसी का काम होगा वो उसे ठीक कर लेगा। और उसकी जो पहली कोट उसमें मैंने एक ट्रेलर पे दी थी, लिली टॉमलिन की कोट है, वो कहते हैं आई ऑलवेज थॉट व्हाई डजंट समबडी डू समथिंग अबाउट इट एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड आई एम समबडी। सो इफ ऑल ऑफ अस कीप थिंकिंग कि ये कोई और करेगा तो भाई मैं इस जिंदगी में मेहमान तो नहीं आया, मेरी जिंदगी पे इम्पैक्ट हो रहा होगा। और अगर आप चुप करके बैठ के किसी और का इंतजार कर रहे होंगे, कोई किसी मसीहा का पता किसका, तो you know you can it's still going to impact you. You'll be pretty much screwed. So again it was the same concept. Take ownership of your life. Answer to yourself. You know, make if that change is going to happen, you have to be that change, right? Now, अब इस मैसेज को जाहिर है क्लोक करना है, बिकॉज अदरवाइज तो मतलब एक स्टोरी में वीव करना है जो कि लोगों को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी लगे, उसमें जहाज भी उड़ रहा हो, उसमें कोई गाना भी हो, उसमें फलाना भी हो, बिकॉज अनलेस वो खाना पैलेटेबल नहीं होगा थोड़ा सा तो nobody is even going to come and taste it, right? So you have to communicate whatever thought is there in your mind in somewhat a palatable form so that people could kind of have try to taste. Now whether they want to pursue it any further after those couple of hours in a cinema or whatever medium they're watching it on is their choice. You can, but the idea was to ask people to be owners, to be Maalik of their lives. Now, and I think in that extent it was successful. A lot of people have seen it. I think the movie needs to be seen outside the characters that it is framed in, because ज़ाहिर concept तो ये दिया जा रहा है कि आप अपनी 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 जिंदगी, अपने मुल्क, अपनी हर चीज की ओनरशिप आप खुद लीजिए। अगर ये मेरा घर है तो फिर इसका बिल भी मैंने ही देना है, इसका बिजली का बिल देना है, इसका पेंट उखड़ा हुआ है तो मैंने खुद ही करना है और मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और जो इसमें खराबियां हैं वो मैंने ठीक करनी है खुद पर। And it applies to all of your life too. So, and because each individual, each family is that basic cell. मैं सैयद मुजम्मिल का कल एक ऐसे यूट्यूब पे कुछ देख रहा था, उसने कहा कि अगर हर घर में डिक्टेटरशिप है तो आप नेशनल लेवल पे जमहूर कैसे एक्सपेक्ट करते? एंड वो हर घर पे डिक्टेटरशिप क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि हर बेटी ने वो उस पे हाँ कर देना है जो अब्बा जी ने कहा, बस फिर ही तो अच्छी बच्ची है, अदरवाइज तो। अब नाउ come to a dad like me who's gone to great lengths to raise a daughter who does not agree with me. It seems funny, so I can't accept that. I think every person has a right to think for themselves and decide for themselves and be able to argue their thought with anybody, you know. तो पता नहीं कहाँ से चले थे और कहाँ आ गए, बट नहीं सर, आप बिल्कुल टॉपिक पे ही हैं और मैं चाहता था कि आप इसी तरीके से आए। अच्छा सर, उसमें जो मालिक मूवी में आपने जो आर्कीटाइप्स या प्रोटोटाइप्स दिखाए, जिस तरह आपने कहा ना कि उसकी इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा, वो तो जस्ट प्रोटोटाइप्स हैं, तो इस तरह के प्रोटोटाइप्स तो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी हैं, तो वहां पे इस मूवी को क्या लॉन्च किया गया, वहां पे इसकी क्या रिसेप्शन थी? क्योंकि ये जो डायनामिक्स है ना, ये जरा पाकिस्तान इंडिया से कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक है, क्योंकि हम रिलेट कर सकते हैं कि
सियासतदान या जिसके पास पावर हो, सियासतदान को छोड़ दें, जिसके पास पावर है, उसके अल्फाज और उसके एक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है। तो सर इसका थोड़ा सा गाइड करें। असल में इंडिया और पाकिस्तान का एक बड़ा पिक्यूलियर कल्चर है इस खित्ते का, ठीक है। और जो मैं अपनी थिंक सीरीज में अभी यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ, यही कर रहा हूँ कि आपकी सोच पे दो बेसिक कंट्रोल्स, एक कल्चर है, एक रिलीजन, और वो आपको एक डायरेक्शन में फोर्स करते हैं सोचने। अब वो कल्चर, इसलिए मैंने वो जो थिंक पे शुरू किया कि सिंस द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन शुरू किया कि एक क्रिएटर है, तो उस क्रिएटर ने तो आज से इतने अरब साल पहले दुनिया बनाई थी, तो आप तो उस अरबा साल पुरानी दुनिया में आपको तो अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए इंसान को आए हुए, ठीक है जी। और फिर आप सो वो आपने देखी होगी, सो मैं उसे यहाँ रिपीट करना मुनासिब नहीं। सो इन एनी केस, अब ये जो पर्टिकुलर खिता है, सो हम जब कहते हैं कि क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, सो आई एम ट्राइंग टू ब्रेक इट इनटू दैट कि वो कल्चर और रिलीजन को हम समझ सकें। अब एक शख्स है जो जाके अपनी बहन को मार देता है, कत्ल कर देता है ऑनर के नाम पे, ठीक है, एंड टेक्स ग्रेट प्राइड इन इट, एंड द होल ग्रुप अराउंड हिम टेक्स ग्रेट प्राइड इन इट कि यार वाह वाह क्या कमाल इस आदमी ने कर दिया। How do you explain this? It's coming from a particular culture, right? So इंडिया एंड पाकिस्तान ये रीजन का एक पर्टिकुलर कल्चर है, और हमें जब तक हम इसकी हिस्ट्री में जाके ये कल्चर नहीं समझते, और इसीलिए मैंने थिंक में कल्चर और रिलीजन से शुरू किया कि और पहले कल्चर, क्योंकि कल्चर फिर बाकी चीजें क्रिएट करता है। तो अगर आप चलते हैं जो जैसे हम क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहते हैं, तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन तो वो यूफ्रेटिस और टाइग्रिस रिवर के दरमियान का जो खिता है जहां पे 10,000 साल पहले इंसान ने वो किया, तो वहां से हमें फर्स्ट सिटीज मिलना शुरू हुई। लेकिन अभी जब आप लेटेस्ट वो देखना शुरू करते हैं रिसर्च, तो आपको इंडिया दूसरा हिस्सा है, इंडिया और पाकिस्तान की रीजन, जहां पे आपको ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस मिल रहे हैं। सो इंडस वैली से पहले की सिविलाइजेशन अभी वहां मिली। सो दिस इज द एरिया जहां पे इंसान ने ये नया एरा वो एग्रीकल्चरल टाइप का शुरू करना शुरू किया, जिसमें आपने एक नए कल्चर की बुनियाद रखी। कैसे? क्योंकि जब मैं हंटर गैदरर हूँ, तो मुझे भूख लगी है, तो मैं जाके एक मछली पकड़ी और खा ली, या फ्रूट्स और बेरीज हमने ली और खा ली, और लैंड पे हम उसी तरह मूव करते रहे। तो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है हंटर गैदरर में। जब आप एग्रीकल्चरल सोसाइटी में आते हैं, तो आप ये देखें कि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज शुरू कहां से हो रही हैं? मिडल ईस्ट, उस पर्टिकुलर एरिया से, इफ वी कैन यूज दैट टर्म मिडल ईस्ट, जहां पे यूफ्रेटिस और टाइग्रिस से ये शुरू होती है एग्रीकल्चरल सोसाइटी, और जहां इंडिया और पाकिस्तान जहां पे ये शुरू होती है, दिस रीजन, these are the oldest places, they have a peculiar culture, because जब मैं एग्रीकल्चर शुरू करता हूं तो मैं दूसरों से लैंड छीनता हूं। जैसे ही आप किसी इंसान से लैंड छीन लेते हैं, क्योंकि इंसान तो बाकी जानवरों की तरह ही रहता था ना जी, तो मैं उस लैंड से अपने लिए शिकार भी करता था, मैं उस लैंड पे अपना छोटा सा घर भी बना लेता था, मैं सो वो इट प्रोवाइडेड मी विद फूड, इट प्रोवाइडेड मी विद शेल्टर, इट प्रोवाइडेड मी विद दैट सिक्योरिटी, दैट स्मॉल लिटिल ग्रुप ऑफ पीपल दैट आई हैड, राइट? When you bring in agriculture and I take over land and the land becomes private, तो अब जो ये आदमी था जो कि इस लैंड पे हंट करके अपने लिए खाना लेता था, मैंने आई डिनाइड हिम दैट फूड, यू कांट हंट ऑन दिस लैंड बिकॉज दिस इज माइन। नाउ व्हाट डज दैट मीन, यू नो, लैंड बीइंग माइन? आप किसी गुलहरी को दूसरी गुलहरी बता सकती है कि ये मेरा लैंड है? यू नो, लैंड इज लैंड, राइट? द प्लैनेट अर्थ डिड नॉट से कि जी अगर जमशेद साहब आज पैदा हुए हैं, तो जमशेद साहब जिस मुल्क में पैदा हो रहे हैं इसमें 5,000 एकड़ अब्दुल गफूर खान का है और इस पे आप नहीं जा सकते। आई मीन व्हाई द हेल नॉट? अब्दुल गफूर खान को ये किसने दे के भेजी थी ये 5,000 एकड़? right? He took it by force from people. That's the only way he could have got to those 5,000 acres, and this was passed on to him by his father and his grandfather. And have you seen a gulhari जिसके अबाव अजदाद ने ये जमीन पकड़ी थी और आज ये जो है? So it's an unnatural thing, but we don't think that far. So in particular खित्तों में जब agriculture आई, so now what did we have to do?
So by force, we took over people's lands, forcing them not to be able to hunt, not to have shelter on this land anymore, not to have their security, because I built a military hunter-gatherer structures में तो फौजें नहीं होती थी, कोई बादशाह नहीं होता था, कोई नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब इन लोगों को मैंने फोर्स किया कि तुमने अगर इस लैंड पे रहना है तो मेहनत तुम करोगे और हिस्सा मुझे दो। So we put controls and slavery onto people, and the jobs that I did not want to do, then I started creating classes. तेरा काम है कि तू जूते बनाया करेगा, तू मोची होगा, तेरा काम है कि तू बर्तन बनाया करेगा, तू फलाना होगा, and we started creating those classes in society. And then to give those classes, so it's a form of control. So just culture को आप support करते हैं, the honor killing. It is not honorable for this. इनका खून अच्छा है तो ये दूसरे खून की लड़की से शादी नहीं कर सकते, और अगर इस खून की लड़की ने कुछ ये किया तो इसको इसका भाई मार देगा. I mean, this is a culture, a form of control that has been weaved around your head, which makes absolutely no sense. And if you try to think about it, I mean, what is the difference between Jamshed and Ashir or anybody else, right? It's the same iron and same, you know, phosphorus and magnesium and carbon and oxygen and the contents which are hydrogen, which is part of my body as yours, right? We have equal capacity to think, but how is this blood or his caste or something different from somebody else? It's a form of social control hierarchy that we deliberately try to create for economic reasons through sheer use of force. And then on that cultural thing, we build a religion, because why would anybody accept it? So एक आदमी पूछेगा जो के बेचारा शूद्र बन गया और ये ब्राह्मण बना हुआ है क्योंकि इसने जमीन भी ले ली. एंड isn't it strange कि आपके पास जो शख्स आके कहता है कि जी ये दुनिया तो फानी है, ये तो आप यहाँ के बारे में क्यों सोचते हैं, असली दुनिया तो इसके बाद आएगी, आपने तो उसकी फिक्र करें, लेकिन आपकी जमीन सारी मुझे दे दें. और आपकी जमीन पे वो साहब काबिज होके बैठ जाते हैं, बड़े पीर भी बन जाते हैं, 1000 एकड़ वो रख लेते हैं. अबे तुझे अगली दुनिया की इतनी फिक्र है तो why do you want my land? So it's all India, Pakistan, and that, and it's strange, you know, that all religions, I mean, Christianity, Judaism, Islam, should come from one particular area. It's because that particular area has a different type of culture. And Hinduism, the oldest religion on the planet 5,000 years ago, should come from India, because that has a similar culture too. So all that agricultural culture brings about a certain form of thinking and control. All right? So India or Pakistan ki thought, अच्छा, अब Maalik India में कैसे receive हुई? I don't know, because it never went to any cinemas in India, right? So YouTube पे बहुत से लोगों ने इंडिया में देखी होगी. But you're absolutely right. They're the same type of countries, and they have similar problems, except the refugee problem, वो हमारा unique है. India, I think, has a working, well, at least a democratic process which has been working uninterrupted, right or wrong, जो भी है. और power जो है जी, वो तो दुनिया के हर खित्ते में हर शख्स को करप्ट करेगी अगर वो पावर एब्सोल्यूट है. The only legitimate form of power, in my humble opinion, is कि जी मैं और जमशेद अगर किसी चीज पे एग्री करते हैं तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम दोनों सामने बैठ के रीजन आउट करके किसी एक एग्रीमेंट पे पहुंच जाएं, then that agreement would be binding on both of us, right? लेकिन any agreement which is by sheer use of force because one party is powerful is actually an illegitimate contract or a relationship. And the contract between the citizen and the state has to be as per the constitution, which has to be made by the will of the people. कि जी मैं इस पे बड़ा
चमन के बॉर्डर पे मैं था, and I think one of the my lessons in democracy that I learned was there, and you find things in the strangest of places. I was posted at Afghanistan border पे चमन है एक जगह, and we had some problems with Afghanis bringing in stuff through Chaman and not willing to pay duties and taxes on it. अंगूर नहीं था, क्या लाते होते थे, खरबूजा बहुत ज्यादा आता है। तो हमने उसे रोकना शुरू कर दिया कि भाई थोड़े से टैक्सेस है, मतलब कोई, बट इशू ये है कि रेट ऑफ द स्टेट है ना जी, यहाँ से हमारा बॉर्डर है, हमारा ये लॉ है, यू हैव टू रिस्पेक्ट, यू हैव टू फॉलो। खैर वो बड़ा हुआ जो भी हुआ। उसके बाद एक मीटिंग कॉल हुई, और उस मीटिंग में पाकिस्तान की साइड से मैं था, कस्टम्स वाले और एफसी वाले और अफगानिस्तान से अफगानी थे, क्योंकि तालिबान कम टाइप, यू नो आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 90s के लोग थे, एंड वो पश्तो ही जनरली बोलते थे, और अंग्रेजी में ज़ाहिर पाकिस्तान का सारा कानून लिखा हुआ है। तो वी स्टार्टेड हैविंग दिस मीटिंग विद देम, इट वाज ब्रिलियंट। I thoroughly enjoyed that experience, क्योंकि वो बातें होती थी, फिर वो कभी लड़ना शुरू कर देते थे, कभी वो हो जाता था, फिर कहते थे ओके टाइम आउट, अभी हम सोचेंगे, डिस्कशन होगा, तो वो बाहर निकल जाते थे, फिर आपस में कोई डिस्कशन करके वापस। खैर एक 5-6 घंटे में ये तय पाया कि जी ओके हम, वो अफगानी मुझे कहता है, ऐसे 5-6-10 लोग बैठे हुए थे, उनकी बड़ी बड़ी पगड़ियां थी जो भी, और वो एक पर्टिकुलर उनकी सोच स्टाइल था, तरीके। तो मुझे कहता है जी हम क्यों आपको ड्यूटी दें? तो मैंने कहा भाई हमारे मुल्क का एक कानून है, तो हम आपके बॉर्डर क्रॉस करके, आपका एक कानून है, अगर हम वहां आएंगे तो हमें वो रिस्पेक्ट करना है, आप अपना बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आएंगे तो हमारा कोई कानून है, आपने रिस्पेक्ट करना है। तो मुझे कहता है वो कानून दिखाओ मुझे। तो ठीक है, हमारे पास सीबीआर का वो लेटर था, वो हम लिख के हुए थे कि जी ये देखें इन प्रोडक्ट्स पे ये रेट ऑफ ड्यूटीज हैं, तो ये हमारा कानून है और बहुत अरसे पहले से। तो वो कहता है दिखाओ, मैंने वो कागज उठाया और पहले साहब को दे दिया। अब वो उन साहब ने यूं करके कागज देखा, जरा वो इंग्लिश तो नहीं पढ़ सकते थे, फिर उन्होंने यूं किया, उसको यूं किया, और अगले को दे दिया, फिर अगले को दिया, अगले को दिया, और वो जो आखिरी आदमी था उसने कागज लेके फेंक दिया। कहते जिस फैसले में हम शामिल नहीं थे वो फैसला हम पे लागू नहीं होता। I love that thought, because that is what democracy is, कि जिस फैसले में हम मौजूद नहीं थे, मेरा रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था, मैं मौजूद नहीं था, उस फैसले को ऑनर करने की मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं, कि that is जमहूर, that is democracy, that is also tribal way of thinking, right? We'll agree right now, sit here, agree to whatever, and then we'll be bound by it. And that day we came with an agreement, which was the same agreement as had happened earlier, because we couldn't step out of the law, right? But जब वो convince हुए कि यार ये बात ठीक है, उसके बाद से we stopped having that problem. पहले रोज लड़ाई होती थी बॉर्डर पे, कभी किसी का सर फटा होता था, कभी किसी को गोलियां लगी होती थी, कभी किसी को कुछ हो रहा होता था। Once we sat down, we came to that agreement. Everybody came to that agreement. Sure, it took problems. बट उस दिन के बाद से वो जाने से पहले आके हमें ड्यूटी देके जाते थे, अपनी एक रसीद लेते थे और चले। बट जमहूर इज दैट प्रोसेस ऑफ बट दैट हैपेंस ओनली विद पीपल हु आर थिंकिंग, राइट? जी सर, बिल्कुल आपका पॉइंट जो है बिल्कुल वेल नोटेड है, और इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन करूंगा। इससे पहले मैं जस्ट बताना चाहूँ अपनी खुशनसीबी के हमारे फिक्शन बुक क्लब में सैयद मुजम्मिल आ चुके हैं, उनसे हमने नीचियन फिलॉसफी पे यानी कि क्वेश्चंस किए थे। और सर अभी आपने सिस्टम की बात की, तो सिस्टम में इतने फ्लॉज हैं कि नेपोटिज्म, कि मैं अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दूंगा, ये पॉजिटिव चीज समझी जाती है। यानी कि आज से हम इरादा करें कि हम नेक होंगे, तो आज से हमने इरादा किया कि हम 100% नेकी का काम करेंगे, तो नेपोटिज्म को हम नेकी समझते हैं कि ये हमारे किनशिप का पार्ट है। और अगर पाकिस्तान के लॉ को देखें तो वो भी एक पीनल कोड अलग है, ट्राइबल अलग है, शरीयत अलग है। तो जिस तरह की आपकी मालिक मूवी भी ये बात करती है कि कई अच्छे काम कानून को तोड़ के आपको करने पड़ते हैं, तो सर इस पे बताइए कि अच्छे कामों के लिए कानून क्यों तोड़ना पड़ता है? क्योंकि मालिक ने भी तो एंड पे किया था ना, ठीक है वो एतराफ कर लेता है कि मैंने 3 मर्डर किए हैं, लेकिन वो अगर कोई आम बंदा भी देखो कि हाँ यार इट मेक सेंस, बट यू हैड टू ब्रेक द लॉ। तो सर इस पे बताइए कि कानून को तोड़ना पड़ता है हमें, तो और एक दफा ये दरवाजा खुल जाए ना कि अच्छे कामों के लिए कानून तोड़ना पड़ता है, फिर तो पावरफुल लोग कहेंगे यार इसी चीज का तो हम वेट कर रहे थे। तो सर प्लीज इस पे गाइड करें हमें।
Malik was exactly for that reason. Malik was a tricky subject because I do not endorse the thought कि जी आपको कानून को तोड़ना चाहिए, ठीक है? Or there is legitimacy in this. I would not like to legitimize it, and that is exactly why Malik में मैंने maximum ये दिखाने, मालिक में मैं कहना ये चाह रहा हूं कि यार जब सिस्टम फेल का होता है तो somebody has to step up and try to push the system in the right direction. You can't be guests, you are the owners. So मालिक में जो मैं concept दिखाना चाह रहा हूं कि they try to push that process along that path कि जी अब एक बंदा है वो बहुत पावरफुल है, उस पे तो कानून लग नहीं रहा, कानून तो लग रहा है लेकिन मतलब उसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, तो वो आके उसको कहते हैं कि अच्छा भाई तू थाने जाएगा, तू वहां पे जाके एक्सेप्ट करेगा जो बातें तू यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, और तू इसको तुझे सेंटेंस वो करेंगे और तू जेल वहां जाएगा, मतलब मैं आपको ना मारूंगा ना पीटूंगा ना, मतलब बट आई विल कोर्स यू टू स्टार्ट फॉलोइंग दैट लॉ and I subject myself or submit myself to the same law. ठीक है जी? तो वो जो मालिक वाला जो कैरेक्टर है असद, he goes over to a police station himself and says कि जी killed people, which is wrong. ठीक है? So I'm definitely not trying to encourage कि जी you take the law in your own hands, but what I'm definitely saying is that any law जिसमें आप की रिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं थी, that is not a legitimate law. क्योंकि जो हम हिस्टोरिकली बात कर रहे हैं कि जिस दिन मेरी जमीन पे किसी शख्स ने कब्जा कर लिया, मेरी जमीन क्या मतलब एक जमीन जो कि सांझी थी, पानी जो कि साझा है, हवा जो कि सांझी है, अगर इस पे कोई शख्स बाय शेयर फोर्स उसको प्राइवेटाइज कर लेता, ये मेरी, ठीक है जी? तो बाय फोर्स ये बादशाह कहां से आया? उन्होंने पैदा तो मतलब the creator did not create a king, right? But the king said, I am here by a divine right. What divine right? You created that divinity to get your right, right? So अब जब ये चीजें आपने फोर्स से ले ली और थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री ये होता रहा, और जो ताकत है, अनफॉर्चुनेटली आज भी ताकत, पावर फ्लोज थ्रू अ बैरल ऑफ अ गन, इट्स अ फैक्ट, बट we have to get away from that. That power has to be the force of law, and that force of law must come by people coming together saying this is the way how we as a society, through the process of democracy, these are the laws that we will accept and live by. And now, like I'm living here in Canada, तो एक आपको कानून का स्ट्रक्चर नजर आता है, मतलब एक छोटी सी पहली लेयर पे हमारी एक म्यूनिसिपैलिटी है, सो उसमें सबके ने एक बायलॉज बने हुए हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते, यार ये क्लियर है कि हम कितने टैक्सेस देंगे, प्रॉपर्टी टैक्सेस कितने होंगे, ये खर्च कहाँ होगा, ये जो साइड वॉक्स हैं, अभी बाहर बर्फ पड़ रही है तो ये साइड वॉक्स साफ करना किसकी जिम्मेदारी, और फिर ये सड़क साफ करना किसकी जिम्मेदारी है, और फिर ये हाईवेज जो हैं ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और ये टैक्सेस एंड एवरीबॉडी हैज टू पे फॉर दोस, क्योंकि ज़ाहिर है ये कोई मुफ्त में तो नहीं कर रहा, बिकॉज व्हेनेवर समबडी इज डूइंग सम एफर्ट he has to be paid, that labor has to be paid for, right? So the community must agree to do something. ये थोड़ी है कि अगर ऊपर से कानून आप पे थोप दिया गया, मतलब I mean like बलूचिस्तान और लाइक एनी अदर प्लेस जहां पे आप अचानक एक आ जाती है और एक फौज कहीं से उठ के आ जाती है, कोई एक अथॉरिटी उठ के आ जाती है जो कि उसने बस आके कह दिया कि जी यहाँ से आज उसने एक दीवार लगा दी, 4 बंदे खड़े कर दिए कि जी ये लैंड है, बस अब यहाँ कोई नहीं आ सकता। Excuse me, should we just accept it because it's authority? So that's the difference. Respect for authority and respect for law are completely different things. Law has to be accepted if it was made through that process of lawmaking where we all agreed to it, where the majority agreed to it, not all, the majority agreed to it, to authority कि जी चूंकि मेरे पास बंदूक है तो भाईजान
प्रॉब्लम यह है हम अक्सर अथॉरिटी को एग्री करते लॉ को, क्योंकि वो उसमें जोर नहीं है. जी It's a सर. pleasure. If Muzammil is here, I at times it's like जब मैं मुजम्मिल की चीजें देख रहा था, it's like looking in the mirror for me. You know, it's saying the same things, and I think every person who starts thinking logically comes to the same conclusion. जी सर, बिल्कुल. अच्छा सर, ये अब थोड़ा सा आपकी रिकमेंडेशंस की तरफ आते हैं. रिकमेंडेशंस बुक्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, कोई सॉरी, जिस तरह आपने सैयद मुजम्मिल का हवाला दिया, कुछ रिकमेंडेशंस हो सकती हैं. आपकी जो थिंक सीरीज है उसमें बहुत सारा आपकी अपनी लाइफ का भी एक्सपीरियंस है, और फिर आपने नीचे 3 बुक्स मेंशन किए हैं कि अच्छा यार आप इन बुक्स को यानी कि रीड कर सकते हैं, जिसमें थ्योरी ऑफ लेजर क्लास और दूसरी है. और मैं एडमिट करता हूं कि मैंने उन तीनों बुक्स को नहीं पढ़ा. तो सर मुझे बताइए, अपने कुछ रिकमेंडेशंस बताइए कि लाइफ एक्सपीरियंस तो अभी हमारा नहीं है. मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई जवान हूं, लेकिन अभी हम उतने इतना गहरा एक्सपीरियंस नहीं है. तो आप बताइए कि आपके अलावा, सैयद मुजम्मिल के अलावा, और किन किन चैनल्स को हम करें, कौन कौन सी बुक्स रीड करें, ताकि हम जिंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें. Okay, जो मैं थिंक सीरीज में करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि एक दफा ऑपरेटिंग सिस्टम सीधा कर. आप समझ गए कि इंटरनली आपकी ओरिएंटेशन ठीक हो जाए. एन एग्जांपल फॉर दिस, लॉन्ग टाइम अगो आई हर्ट माय बैक, एंड यहाँ कनाडा में एक कायरोप्रैक्टर है, मैं उसके पास गया तो बड़ी कमर में मुझे तकलीफ थी. तो जब मैंने उसे कहा, मैंने कहा आई हैव पेन इन माय बैक, तो उसने कहा वी डोंट चेस पेन, इफ यू हैव पेन दैट्स आई एम नॉट हियर टू फिक्स योर पेन. अच्छा, मैं कहा ये अजीब आदमी है, गुस्सा भी बड़ा है, आपको वैसे ही तकलीफ हो रही है, सब शदीद आप दर्द में है, और जिसके पास आप आए हैं कि वो ठीक करेगा, वो आपको कहता है कि भाई तेरी पेन से तो मेरा कोई ताल्लुक है. ठीक है, कहते मैं तेरा पॉस्चर ठीक करूंगा. कहते क्योंकि ये जो पेन है ये किसी और वजह से है. और उसने कहा कि जी एज अ chiropractor I'm trained in this, I understand that since you maintain a particular posture in which has become a habit for you, ultimately you are stressing different muscles or different places in your body which is causing this pain. If we can fix your posture, your pain is something that will go away automatically. Now it's like teaching somebody to fish or to giving fish to somebody. So अगर आपका posture ठीक हो जाता है, thinking में what I'm trying to do, the think series जो मैं कर रहा हूँ YouTube पे, I'm trying to give you a paradigm कि भाई ये एक posture है मेरे point of view. आपको कुछ और समझ में आता है आप वो करें, लेकिन मैंने एक consideration आपके सामने रख दी है कि जी मुझे तो ऐसे लगता है, क्योंकि ये फैक्चुअली आप बातें प्रूव कर सकते. मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है कि यार ये तो सवाल आप करें ही ना, क्योंकि आपका जहन यहाँ तक पहुंच नहीं सकता. व्हाट नॉनसेंस, मेरा जहन कहीं भी पहुंच सकता है. तो पहली तो चीज आपने ये अपने सिस्टम से निकाल के बाहर फेंकनी है कि यार देयर आर एनी बाउंड्रीज टू थॉट, या मेरा दिमाग इन बातों पे नहीं पहुंच सकता. क्यों नहीं पहुंच सकता? बिल्कुल पहुंच सकता है. सो यू आर लिमिटलेस, राइट. तो अगर आप उस पर्टिकुलर आपका वो पोस्चर एक दफा ठीक हो जाता है, तो फिर आप सैयद मुजम्मिल को सुनेंगे, मुझे सुनेंगे, किसी और, फिर आप जाएं जो मर्जी करें, जो मर्जी सुने, जिस आपको खुद ब खुद उनमें लॉजिकल कंसिस्टेंसीज या इनकंसिस्टेंसीज या प्रॉब्लम्स एंड हाउ दे डिफर फ्रॉम रियल लाइफ आपको खुद ब खुद नजर आने शुरू हो जाएंगे, राइट. सो so like my life, it started simply as I suppose anybody else's life started in my journey of reading. It started simply with उस दौर में comics होते थे, बैटमैन, जो भी स्पाइडरमैन, बैटमैन, जो भी हम जाके छोटे छोटे ले आते थे, बच्चे पढ़ते थे. Then Enid Blyton, Fantastic Five or something, and then Louis L'Amour, कुछ देर पढ़ते रहे, जैसे जिंदगी. Then I used to always loved science fictions. उसमें Foundation series, Asimov, and then I got into more serious literature, philosophy, और ये आखिर में मतलब ये मैं क्यों कर रहा हूँ और ये मैं क्यों अब
पढ़ना शुरू हो रहा हूँ, बिकॉज इन द एंड यू एज अ ह्यूमन नीड टू सेटिस्फाई योरसेल्फ कि यार हाउ डू आई मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड, and then your brain says okay तो ये क्यों ऐसे हुआ. Say for example, जैसे मेरा सवाल मेरे अपने से था कि मैं इधर देखता हूँ ये गुलहरियां हैं, इन ये तो मतलब कोई गुलहरी किसी दूसरी गुलहरी को किराया नहीं दे रही ना एक दरख्त पे रहने का, तो ये हम इंसान क्यों दे रहे हैं, right? So now I wanted to find that out, right? ये कहाँ से शुरू हुआ, इसको बादशाह किसने बनाया था, right? ये मज़ाहिब कैसे शुरू हुए. सो वो फिर आपकी इंक्विजिटिवनेस आपको खुद उस डायरेक्शन में लेके जाएगी, आपको एक हंगर होगा, आप फिर जाके वो सब्जेक्ट्स गूगल करना शुरू करेंगे, ढूंढना शुरू करेंगे, वो किताबें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी. कुछ थॉट से आप अग्री करोगे, कुछ थॉट से आप नहीं अग्री करोगे, बट देन actually I'm trying to start that process of your trigger, that you start seeking answers to questions without being bogged down by any particular फ्रेमवर्क और लेंस के बस इस पाइप में से तूने देखना है, आपका पाइप में हटाना चाहता हूँ, दैट्स इट, यू नो, गो एंड लुक एंड सीक एंड यू विल फाइंड, राइट. सो in that paradigm, when I say that you read such and such book, I think I would be going against my own philosophy, right? Just be inquisitive, just want to learn, find that, satisfy yourself, find that answer for yourself, and wherever you find that answer and you're happy with your answer, so be it, go ahead. सर ये बड़ा यूनिक आंसर आया अब तक के जितने मेरे गेस्ट आए हैं ना. तो सर अगर आपके पास टाइम हो तो एक दो क्वेश्चंस हम लाइव स्ट्रीम वगैरह से ले सकते हैं. मेरे पास फुल टाइम है, that's it, so you can ask me whatever you want. I hope I'm not wasting your time, but that's it. अरे नहीं सर, ये तो आप शर्मिंदा करने वाली बात कर दी आपने. नहीं honestly, because I don't know, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि मैं relevant बात कर रहा हूँ, हो सकता है आपको ना लग रहा हो, so that is fine. If you don't think that I'm making sense to anybody anymore, just tell me, I'll go away. हाँ, नहीं सर ऐसा नहीं है. असल में कुछ लोगों का कहना बहुत मैटर करता है, वही आपको इंस्पायर भी करता है और वही आपको मोटिवेट भी करता है. तो एक कर्ट वॉनेगट आई बिलीव उसकी बुक है कि उसमें वो कहता है कि व्हाट आई नीडेड टू लर्न इन लाइफ आई लर्नड इन किंडरगार्टन. किसी को खामखा थप्पड़ नहीं मारना, किसी भाई झूठ नहीं बोलना, तो वो हमारी सारी जिंदगी किंडरगार्टन ही को इम्प्रूव करने में गुजरती है. तो वो कई दफा हम वो सबक भूल रहे होते हैं. तो आप जैसे लोग जो कि मतलब है तो एज वाइज नहीं, मतलब आपकी एक्सपीरियंशियल वाइज मैं आपको बुजुर्ग मानता हूँ, इसमें नो डाउट अबाउट इट. तो आप जैसे लोग जो है वो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन का काम करते हैं, आपके मुंह से जो बात निकलती है वो असर रखती है. तो सर अभी हम क्वेश्चन लेते हैं. एक चीज, let me quickly add that. बहुत सोचो विचार के बाद, and I may be wrong because it's a continuous process, right? जो आपने अभी टर्म यूज की ना कि किंडरगार्टन में हमें किसी ने कहा किसी को थप्पड़ नहीं मारना, किसी को फलाना नहीं, मुझे अभी तक ये लगा है यहाँ पे पहुंच के जिंदगी पे कि ह्यूमन नेचर में डॉसाइल होना अच्छी बात नहीं. सो मैं तो मोरालिटी वगैरह वगैरह को कोई बहुत ज्यादा अच्छी चीज नहीं समझता, क्योंकि वो कल्चर ने आप पे एक चीज कंट्रोल के लिए थोपी है. क्योंकि जिस बादशाह ने आपकी जमीन, आपकी रिसोर्सेज आपको एक क्लासेस में फेंका, वो आपको डॉसाइल बनाना चाहता है कि आप ये एक्सेप्ट कर लें. अगर आपकी बहन को गोली भी मारनी पड़ती है आपको, तो इस कल्चर में आप एक्सेप्ट करें और उसको आप बड़े प्राइड से देखें, राइट. आई थिंक इट इज नेसेसरी फॉर यू, अगर जहां किसी को थप्पड़ मारने की जरूरत है, दो मारें, राइट. बिकॉज वी आर बीइंग टॉट और ब्रॉट अप इन अ वे to try to make us, और वेस्ट में अभी ये बहुत ज्यादा हो रहा है. You would be shocked कि the children going to school in Canadian schools now, boys are not allowed to play with football in a particular manner कि इससे किसी को चोट लग जाएगी, और ये बॉल इतना सख्त नहीं होना चाहिए, कि ये नहीं होना चाहिए. You know, there is nature of millions of years. So let them be what they are. लॉजिकली सोचना सही शुरू कर दें, लेकिन अगर हर शख्स हाथ बांध के बैठ जाएगा और अतात करना शुरू कर देगा, तो दिस इज वेयर यू गोइंग टू एंड अप. यू हैव टू बी अग्रेसिव. इसमें आई टुक अप द इशू ऑफ, मतलब एक बादशाह आया, बादशाह ने मेरी जमीन भी ले ली, मेरा शेल्टर मुझसे ले लिया, मेरा राइट टू हंट मुझसे ले लिया. उसके बाद उसने मुझे कहा कि तू नेजे भी नहीं कैरी करेगा, तू बर्चियां भी कैरी नहीं करेगा, तू तीर कमान भी कैरी नहीं करेगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरी फौज कैरी करेगी. क्यों भाई?
So so as I said कि जी, so I just wanted to comment on that कि जी हमें अगर स्कूल में ये सिखाया गया, so open your mind कि जो मुझे स्कूल में सिखाया गया क्यों सिखाया गया, and I'm not saying कि you need to go and be argumentative or intolerant. मैं तो कह रहा हूँ आपको बहुत tolerant होना है, आप हर एक की बात सुनो, उसमें से जो आपको नगेट मिलते हैं आप accept करो, आप दूसरे को convince करो, इकट्ठे चलो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप pacifist होंगे. Turn the other cheek, no bloody way. You know, somebody hits you, get back to them. You know. जी सर, वेरी वेल सेड और आपका पॉइंट वेल टेकन। सर अभी कुछ क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है नहल सलीम की तरफ से, स्ट्रीम पे है कि एज ए राइटर हाउ डू यू थिंक करंट मीडिया कैन बी रिफाइंड फ्रॉम टॉक्सिक थिंकिंग एंड हाउ कैन हेरिटेज रिसर्च लीड टू पैराडाइम शिफ्ट। एक तो ये क्वेश्चन है और सेकंड एक क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का जो ऑब्सेशन है ना, ये उमर बिन अदनान की तरफ से है कि पाकिस्तान का ऑब्सेशन है पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने से, तो इसको कैसे हम डील कर सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव इमेज की ऑब्सेशन और दूसरी है कि हेरिटेज रिसर्च अगर हम करें, अपने हेरिटेज को फाइंड आउट करें, तो वो कैसे हमारा पैराडाइम शिफ्ट करेगा सोसाइटी का। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सही समझ पाया हूं तो कि करंट मीडिया कैन बी रिफाइंड फ्रॉम टॉक्सिक थिंकिंग। अच्छा जी, देखिए मीडिया फॉर्चुनेटली इज अ बिजनेस, राइट। तो जाहिर है लोगों ने तनख्वाहें भी लेनी है और उनके ओवरहेड्स भी हैं और ट्रांसमिशन की भी कॉस्ट्स हैं एक्सेट्रा। टिपिकल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब मैं मालिक बना रहा था तो 0 to 1 एंड इट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑन एनीबॉडी, इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑन रियलिटी। तो जब मैं मालिक बना रहा था तो 0 to 1 के सेट पे मैं ऐसे गया हुआ था, तो वहां पे मुझे एक साहब मिले, ARY के थे, क्या नाम था उनका, JJ, डिसीजन मेकर इन ARY। तो मुझे कहता है आशिर आप सुने कोई फिल्म बना रहे हैं? मैंने कहा जी सर मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। तो कहते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है? मैंने उन्हें बताया कि मालिक क्या है, इट्स अबाउट ओनरशिप ऑफ योर कंट्री एंड पॉलिटिकल। ही सेड यार टाइम जाया करोगे, अपने पैसे जाया करोगे, कोई कोई फायदा नहीं, ये नहीं। मैंने कहा साहब क्यों? कहते यार लोग ये नहीं देखते, देखो हम रेटिंग्स पे चल रहे होते हैं, हमें हमें पता है कि लोग क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये बिजनेस है। आप तो वन टाइम फिल्म मेकर हो, एंड ही वाज राइट। तो वो कहते हैं कि जी मैं कंटिन्यूसली रेटिंग्स मेरे पास आ रही होती हैं कि लोग क्या देखना पसंद करते हैं, हम वो बनाते जाते हैं। मैंने कहा जी इसमें ये भी हो सकता है कि जी चूंकि आप लोगों को चीज ही एक दे रहे हैं थ्रू आउट, सो इफ यू कंटिन्यूसली गिविंग पीपल ग्रीन एंड देन यू से हे एवरीबody loves green, it probably means nothing. I mean, have you ever thrown pink at them and then said, okay, you know, well, some of them like pink too. He said, no, no, देखो हम में रेटिंग्स हैं, तो वो रेटिंग्स बताती हैं कि क्या करना है, तो इसलिए हम, और जाहिर उन्होंने कमर्शियली सक्सेसफुल होना, तो उन्होंने एक अपना पूरा एक रेटिंग का स्ट्रक्चर बनाया। तो मैंने कहा जी आपकी रेटिंग क्या कहती है कि जी क्या मुझे करना चाहिए जो कि कमर्शियली सक्सेसफुल होगा? तो उन्होंने कहा कि जी हमारी रेटिंग ये कहती है कि अगर एक औरत को एक कमरे में बांध कर, दिस इज लिटरली, मैं इसमें एग्जैजरेशन नहीं है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड टू, एक औरत को एक कमरे में बांध करो और जितना मारोगे वो जितना रोएगी वो उतनी ज्यादा उसकी रेटिंग होती है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि औरतें जनरली मीडिया देख रही हैं एंड दे हैव दिस कैथारसिस एंड दिस इज व्हाट मेक्स सेंस, राइट? Now, this is a formula that every media channel, because ultimately they're putting in an X amount of money and they need an Y amount of money to come back from it so that they can keep moving, right? So they have set up this system of rating in which they are going to determine whatever makes sense to them, keep making more and more of it. So मैंने कहा जी ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, and I'm nobody to tell you कि you're wrong. Please continue with it. बट यू नो मैं खुद मैं इस तरफ जा रहा हूँ, मुझे इस तरफ जाने दें, क्योंकि मैं ना आपसे कुछ मांग रहा हूँ ना मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। तो मगर मैं अपना नुकसान करूंगा तो अपना करूंगा, फायदा करूंगा तो अपना करूंगा। तो सो मीडिया को टर्न अराउंड करना इतना आसान काम नहीं है, बिकॉज इट्स अ कमर्शियल थिंग। और जैसे मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि नई चीजों को या जिन चीजों में भी इश्यूज बेस्ड होंगी, कमर्शियली लोग उसमें नहीं पढ़ना पसंद करते, बिकॉज nobody wants to create enemies.
तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लोग आपका चैनल देखना बंद कर देंगे, nobody wants to take that risk. So turning media around is going to be, I don't see क्योंकि लोग ये कहते हैं कि जब पीटीवी का दौर था और उसके बाद जब इतने ज्यादा चैनल्स और आ गए हैं तो फिर तो जी मीडिया में शायद कोई बड़ी तरक्की हुई। हुआ यह है कि साइज ऑफ द पाई तो जनरली उतना ही रहा या शायद श्रिंक हुआ, क्योंकि मीडिया चल रहा है एडवर्टाइजमेंट पे। उस वक्त पीटीवी के दौर में दैट एंटायर पाई वाज अवेलेबल टू अ सिंगल यूजर, सो they had more luxury to invest कि जी अच्छा मुझे 100 रुपए तो मिलने ही है, तो मैं जरा आर्ट में भी घुसूंगा और मैं जरा उसमें भी जाऊंगा। एंड सिंस इट वाज नॉट अ सेठ की दुकान, तो मे बी प्रॉफिट, sole profit was not maybe even the motive. Thought control could be a motive. आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम भी नजर आ जाते थे कि सड़क कैसे क्रॉस करते हैं, या अखलाकियात पे भी कुछ प्रोग्रामिंग होती थी, या लेकिन वो जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ी है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ पाई, then it's become a cutthroat structure of rating. So I think it's a complex situation. I don't have a simple answer for it. ये जी कमर्शियल वायबिलिटी रखते हुए भी आप, दूसरा जो सवाल है हेरिटेज के हवाले से कि हम अपनी हेरिटेज को रिसर्च करें तो क्या हम इम्प्रूव करेंगे, डेफिनेट। लेकिन फिर वही वाली मेरा सवाल है कि क्या आप पहले किसी चीज को मान के उस पर रिसर्च करना शुरू करेंगे, राइट? कि जी अब मैंने पहले मान लिया कि जी हम दुनिया के बेहतरीन लोग हैं, हम सबसे हीरो हैं, हमारे फलाने फलाने सारे हीरोज थे और ये हमारी हिस्ट्री है। अब ये मान के मैं उसमें से सिर्फ सिलेक्टिव इंफॉर्मेशन अपने लिए उठा रहा हूँ एंड जस्ट रीइंफोर्सिंग माय एग्जिस्टिंग व्हाटएवर इट इज, और डू यू अप्रोच योर हिस्ट्री, योर पास्ट as completely with an open mind that I'm a traveler, I'm going to explore, okay, so what really happened here? क्योंकि देखें जब आप मुताले पाकिस्तान पढ़ते हैं तो हमने ज़ाहिर स्कूलों में पढ़ा था थ्रू, तो आपको एक पर्टिकुलर तरह से हिस्ट्री नजर आती है ना, क्योंकि ज़ाहिर किताबें भी आपने खुद ही बनाई हैं, आपने खुद ही करिकुलम में डाली हैं, आपने खुद ही छापी हैं, आपने अपने ब्रांड हिस्ट्री देने की कोशिश की है, लोगों को पता है। लेकिन जब हम सिविल सर्विसेज में का एग्जाम दे रहे थे तो वहां पर तो फिर जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वो ज़ाहिर है वो और तरह है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें तो सारे लोकल ऑथर्स नहीं थे, एंड सडनली इट स्टार्ट्स मेकिंग सेंस टू यू एंड यू स्टार्ट गेटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ दीस क्वेश्चंस। डैम, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरा दिमाग वहां जाने ही नहीं दिया गया। सो आप यकीनन देखें, पर अप्रोच योर पास्ट, योर फ्यूचर, योर हिस्ट्री, बट as I said, I'm just trying to correct that posture. How do you approach it? Am I going to see the world with the pink lens I already have on and everything looks pink to me? Or am I going to take my lenses off, throw them away, and then go and explore the world and find out whatever it is that you find out? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन व्हेन से रिलेटेड है, फ्यूचर प्रेडिक्शन है। तो वो क्वेश्चन लाइव स्ट्रीम से आया है कि उमर बिन अदनान का क्वेश्चन है कि व्हेन डू यू थिंक दैट पाकिस्तान विल प्रोड्यूस इट्स ओन टैरेंटिनोज, क्रिस्टोफर नोलन्स, कुब्रिक्स रादर देन प्रोड्यूसिंग मोर खलील रहमान कमर, विल इट एवर हैपन? तो ये इनका शायद ये राइट विंग की तरफ थोड़ा सा इनका ज्यादा है, खलील रहमान कमर साहब का। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास इस तरह के क्रिएटिव थिंकर कब तक आएंगे? तो इसमें आपका व्यू जानना चाहूंगा। सैयद मुजम्मिल साहब जो है वो अपनी कुछ वीडियोस में बताते हैं कि ये सिस्टम पूरा ब्रेक होगा फिर बनेगा। तो मैं तो खैर इन चीजों के खिलाफ हूँ, सिस्टम के ब्रेक होने के। तो सर बताइए कि व्हेन का आंसर कुछ है कि 10 साल, 20 साल, या सिस्टम को ब्रेक होना होगा? तो प्लीज इस पे गाइड करें। देखिए, अगर हम नॉर्थ जाना चाह रहे हैं, ठीक है जी, तो हम तब कह सकते हैं ना कि जी हम नॉर्थ पहुंच जाएंगे 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, अगर हम नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं। अगर हम चल साउथ की तरफ रहे हैं और फिर हम कहें कि जी हम नॉर्थ कितने साल में पहुंच जाएंगे, तो एक्चुअली वी आर नेवर गोइंग टू मेक इट, यू हैव टू टर्न अराउंड, राइट? So if Syed Muzammil is saying that we'll have to break it once, I hate the concept of breaking it too, right? And that is why concepts like think, where you are asking people कि यार तुम सोचना शुरू कर, क्योंकि बेस्ट ये है
one of my favorite books which I think formed a lot of my thought, हालांकि उस वक्त मुझे किताब की उस तरह समझ नहीं आई थी, वो आइजैक एसिमोव की फाउंडेशन सीरीज है ना, जो मैंने as a teenager पढ़ी and enjoyed it. It talks about a universe, I think many millions of years from now, और पूरा जो यूनिवर्स है वो एक एम्पायर है, और वो जो एम्पायर है वो ज़रा बहुत बड़ी है और उसकी ब्यूरोक्रेसी बहुत बड़ी। तो एक सोशल साइंटिस्ट है जो इस नतीजे पे पहुंचता है कि यार ये जो एम्पायर है ना, ये अब इतनी इनएफिशिएंट हो गई है, इतनी बड़ी हो गई है कि ये इट्स गोइंग टू कोलैप्स। और उसका मानना ये होता है कि जब भी कोई चीज कोलैप्स करती है, ब्रेक करता है सिस्टम, तो उसके बाद एनार्की आएगी। And he believes that the worst form, the worst crime, the worst sin, for want of a better word, is anarchy. So any system is better than anarchy because anarchy has a terrible cost. आप अफगानिस्तान में देख सकते हैं, एक दिन अमेरिका और रशिया की जब वॉर हो रही थी, एक दिन रूस अपने मुल्क चला गया, अमेरिका अपने मुल्क चला गया, वहां पे हर किस्म का स्ट्रक्चर खत्म हो, और उसके बाद दे स्टार्टेड, वॉरलॉर्ड्स आ गए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, कमिंग फ्रॉम क्वेटा, close proximity to what was happening in Afghanistan and after that Russia-Afghanistan war. So it was a terrible price that those people paid. और लोग तालिबान को बहुत बुरा भला कहते हैं, rightfully so, but when the Taliban came, it was still better than the anarchy which prevailed before them. क्योंकि जाहिर है उस एक टोटल नॉन सिस्टम से कोई भी सिस्टम उठेगा तो वो एटलीस्ट थोड़ा बेहतर था। So anarchy is the worst form. So nobody wants to break a system. Ideally, it would be better कि within the system changes आनी शुरू हों, ताकि आप उस anarchy की जो terrible जो bloodshed उसका होगा, जो उसने, remember what happened in 47 when Punjab was being partitioned? What kind of a terrible cost is that? Could that not be done in a more orderly manner? But no, right? So I'm not a fan of breaking the system. So वो जो साहब हैं हमारी किताब में, वो social scientist, तो वो चाहते हैं कि मैं एक alternate system side में build करूं, because he calculates that in about 40,000 years this empire is going to collapse and anarchy will start. So if we start doing something here which creates that a parallel system, so by the time this empire is collapsing, there's another system which will be ready to take it over, a better system. So and that is what we must attempt to do, and that is where the people of the country, and Pakistan is such a young country. I mean, 20-22 saal average age hai. These people have a life ahead of them, and that's why I've been a great advocate of creating systems. अगर मैं customs में क्या, मैं system बनाऊं, जब तक आप ये अच्छा आदमी ढूंढते रहेंगे ना, अच्छा आदमी is no system, what system? कि जी इस अफसर को लगा दें बड़ा अच्छा, you keep going away from the system. Stop talking about morality, start talking about systems. How do you make sure कि जी ये system impartial होगा, हर एक को बराबर का treat करेगा? And I think the answer was in automation, and that's why I always wanted to create those automated systems. Customs में भी, मतलब customs में जब हमने fax बनाया था तो रिश्वत फलाना फलाना खलास फिनिश थी, मतलब लोग नौकरी नहीं करना चाह रहे थे, कोई पोस्टिंग नहीं होती थी, कर नहीं लेता था। उसकी वजह क्या, हमने क्या किया था? कोई जादू की छड़ी नहीं थी, हमने कोई लोगों को जाके मोरालिटी उनकी ठीक करने की कोशिश नहीं की। हमने कहा तूने करप्शन करनी है, तू फुल अपनी कोशिश कर ले करप्शन करने की, we'll build a system that won't let you do it. Why? Because the moment I make it all electronic, so now Jamshed is sitting at home and he's filing a declaration to customs over internet, right? तो जो आपका शिपिंग का डेटा है वो हमें डायरेक्टली मस्क से हमारे सिस्टम पे आ रहा है, उसको आप अपने बीएल को तो चेंज कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि हम आपसे मांग ही नहीं रहे कोई डॉक्यूमेंट जिसको आप ऑल्टर करोगे, वो तो मुझे डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स मेरा सिस्टम कैप्चर कर रहा है। यहाँ से आप उसकी बाकी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, वो इंफॉर्मेशन आप डायरेक्टली अपने घर से रात के 2 बजे बैठे डाल रहे हो। सो टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के दरमियान राब्ता ही नहीं है,
और अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन हर चीज के मुताबिक है तो मशीन खुद ही क्लियर कर देती है। और अगर कहीं कोई इशू आता है जिसपे किसी ह्यूमन ने इंटरफेयर करना है, तो वो हमारा स्टाफ भी कंप्यूटर्स पे बैठा हुआ है और उसको ये इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही कि इसका इंपोर्टर कौन है, ठीक है। क्योंकि गाड़ी, फर्ज करें गाड़ी इंपोर्ट हुई है, ये कप इंपोर्ट हुआ है, ये कप तमाम दुनिया $5 का मंगा रही है फर्ज करें, और इस सप्लायर से मंगवा रही है, और ये सप्लायर है भी कप्स का मैन्युफैक्चरर, ये टीवी नहीं बनाता, ठीक है, आपके कंटेनर का वेट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, और आपने भी इतने के डिक्लेयर किया, तो देयर इज नो रीजन फॉर अस टू स्टॉप यू एंड यू जस्ट बी क्लियर्ड योरसेल्फ दैट यू नेवर कम इन कांटेक्ट। और अगर इसमें कोई इशू है कि आपने $3 का डिक्लेयर किया है, ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, और बाकी सब 5 का करते हैं, तो इट कम्स अप टू अ कस्टम्स असेसमेंट ऑफिसर हु सिटिंग इन सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, राइट। तो उससे सिस्टम वो सारी इंफॉर्मेशन रख लेता है कि इसका इंपोर्टर कौन है। जमशेद तो उसे दिखाते नहीं कि जमशेद ने इंपोर्ट किया कि एसआई ने इंपोर्ट किया, और जब ये डिक्लेरेशन आई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा, सो पहले आपने इस पे फैसला करना है, राइट। क्या ये क्वांटिटी की वजह से, he can ask you questions, they'll come to you online, you can submit documents, whatever, but the moment you create systems. If you don't create systems, आप सारी उम्र लोगों को ट्रांसफर करते रहे, पोस्ट करते रहे, मैंने बड़ा अच्छा आदमी लगा दिया, what does that mean, right? And you'll have to create systems. Now, will it happen? मैं उतना ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ जितना शायद सैयद मुजम्मिल है। सही, आई गॉट योर पॉइंट। और सैयद मुजम्मिल साहब जो है वो ऑफ कोर्स ये सोफिस्टिकेटेड आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं। मैंने तो उसको थोड़ा सा क्रूड वे में बताया, वो थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देते हैं कि वेस्टर्न जो यूरोप है वो इस वक्त पीसफुल इसलिए है क्योंकि उन्होंने इतनी सारी वॉर देख ली, उनका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और ये सब कुछ देखने के बाद ना उनको इसकी अहमियत का भी एहसास है, तो इस वजह से वहां पे पीस है। तो वो काफी सोफिस्टिकेटेड आर्ग्यूमेंट है। तो आई अपोलोजाइज कि अगर मैं उनका आर्गुमेंट सही प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्रूड सेंस में मतलब इसको वो कर रहा हूँ। अच्छा, इसी से रिलेटेड गासिफ आप एक क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर जॉइनिंग। सर मेरा सिर्फ क्वेश्चन इसमें ये हुआ कि अब जैसे कि इनिशियली अगर हम देखते हैं तो जैसे आपने कहा कि हर किसी के पास, हर शख्स के पास इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वल जो नेचर का लॉ है कि पानी भी सबका था, जमीन भी सबकी थी, ठीक है। लेकिन जो ह्यूमन थॉट प्रोसेस है वो ऐसे चल नहीं सकता। जैसे अब एक शख्स है, वो एक जमीन पे आके ठहरता है तो वहाँ की ओनरशिप लेता है, वो खेती बाड़ी करता है, वो देखता है कि ये जमीन जो है कोई एक्सटर्नल थ्रेट से, मतलब आग वाग से ऐसे ना जले, और ये जमीन जो फर्टाइल है। और अब जब दूसरा एक और, वो जो पुराना खान बुजुर्ग जो कि इस चीज के साथ, इस थॉट प्रोसेस के साथ वापस आता है कि भाई जमीन तो सबकी है, तो अब वो तो इसको टॉलरेट नहीं करेगा ना, क्योंकि उसने इसका ख्याल रखा है इतने साल, उसने इनिशियल इसको दूसरे थ्रेट से बचा कर रखा, इसको प्रोडक्टिव बनाया उल्टा। तो तो अब जैसे सर आपने मालिक में वाली बात की कि मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ, तो जैसे मालिक के दर्जे हैं, मुझे मेरी मलकियत इसलिए मिली क्योंकि एक बड़ा मालिक था जिसने ये चीज करी कि वो इधर इन चीजों को आउटसोर्स करे। तो अगर अब मैं एक छोटा मालिक होते हुए उसको मना करूं या उसको मना करूं, तो वो तो बोलेगा कि भाई तुम मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट होकर खड़े हो। तो सर मुझे इस बात में पूछना था कि हम उनको कैसे टारगेट कर सकते हैं, या उस बात तक कैसे पहुंच सकते हैं जब हम खड़े ही उनके दिए हुए ग्राउंड के ऊपर हो रहे हैं। इन फॉर्मल सर मादर मेरे वर्ड्स कुछ बोले हो तो थैंक यू। So the concept, अभी तो चूंकि वो थिंक सीरीज चल रही है और मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचा हूं, तो मैं ये तो एडवोकेट नहीं कर रहा कि वी शुड गो बैक कि जहां पे प्राइवेट ओनरशिप खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो होगा नहीं अब, राइट। So there are two parts of what I understand to your question. देखिए, एक आपने कहा कि जिस आदमी ने उस लैंड पे सारी मेहनत की, उसे इतने साल प्रोटेक्ट किया, उसे इतना सिंचा, अपनी मेहनत खून पसीना बीच में डाला, वो क्यों वो लैंड किसी और को दे दे, वो कॉमन क्यों हो जाए? जिस आदमी ने कुछ किया ही नहीं, वो सुता प्यार है, तो वो आके कह दे कि नहीं जी ये तो मेरा भी उतना ही है जितना आपका। Perfectly legitimate question, and that's not even what I'm saying. But my question is कि जिसके पास ये लैंड इतने साल से रही है, क्या वाकई इसने इस पे कोई खून पसीना को कुछ सर्व किया है कि ये इसको अंग्रेज ने एज अपनी खिदमत करने के इवज दे दी थी, और इस पे जो मेहनत करता रहा है थ्रू आउट, वो है जिसका इस पे कोई राइट नहीं?
आज। तो पहले तो आपकी ये असम्पशन कि जी जिसके पास ये लैंड है उसकी, और एंड ये आर्ग्यूमेंट मैं अपनी थिंक सीरीज में कर रहा हूं कि देयर हैज टू बी अ नेक्सस बिटवीन लेबर एंड वेल्थ। मतलब जिसने मेहनत की है, जो जो हाथ काम कर रहा है, क्या उस हाथ को उसका रिटर्न है? क्योंकि जब तक हम हंटर गैदरर्स थे फॉर एग्जांपल, और बहुत सी जगहों पे आपको ज़ाहिर है एक्सट्रीम एग्जांपल्स लेने पड़ते हैं टू क्लैरिफाई अ सिचुएशन। रियल वर्ल्ड इज नॉट दैट one or zeros, right? It may be a lot of shades of gray, but it's easier to take black and white as just for the purpose of comparison and start a thinking process, right? So जब से हम hunter gatherers थे, तो अगर मैं निकलता हूं, हंट करता हूं या गैदर करता हूं तो मैं खाता हूं, ठीक है? और जो कुर्सी पे यूं करके बैठा रहता है, ना हंट करता है ना गैदर करता है, और फिर एक्सपेक्ट करता है कि मैं खाऊं आपसे दुगना, तो क्या वो लेजिटिमेट है? सो हमने क्या, जिसको हम सिविलाइजेशन कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि ये सिविलाइजेशन में हमने एफर्ट और लेबर का ताल्लुक तोड़ दिया है रिटर्न से, और बल्कि जो लेबर नहीं करता, जो लेबर करता है उसे हम कमी कहते हैं, ठीक है? उसको हम डेरोगेटरी देखते हैं, हम उसको नीचे समझते हैं। तो आपने तो न सिर्फ एफर्ट और लेबर और उसके रिटर्न्स को आपस में तोड़ दिया, आपने एक्चुअली उसको वर्स कर दिया। आप कहते हैं मैं यहाँ कुर्सी पे बैठूंगा, मैं खाऊंगा और तू मुझसे कमतर है क्योंकि तू मेहनत कर, तो मेहनत तू करेगा, खाएगा मैं, खाऊंगा मैं। दिस इज there's something wrong with this, right? Now what's the solution? I think democracy is a solution. जहां पर जब आप एक सिस्टम बनाने जाते हैं तो हम सबकी बराबर की वॉइस होती है, राइट? एटलीस्ट, क्योंकि इस वक्त तो आपका जो वोटिंग सिस्टम है, आई थिंक इवन व्हेन वी हैव अ वोटिंग, इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस राइट नाउ, क्योंकि वो तो जब तक आप उस तसलसल को थोड़ी देर चलने नहीं देंगे तो जमहूर उस सेंस में आएगा भी। वो तो जब हम सब मिलके 100 के 100 अगर लोग हैं, जिसमें से लैंड ओनर्स भी हैं और मेजॉरिटी फर्ज करें जिसकी एफर्ट को हम छोटा समझते हैं, जब तक वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, उस लॉ मेकिंग प्रोसेस में नहीं आएगा तो हम किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे ना। फिर तो तब तक तो ये धौंस और पावर ही की दुनिया रहेगी। आई होप आई मेड सम सेंस। Yes, sir, absolutely. Rahima, please go ahead with your question. Assalamu alaikum. First of all, thank you for your presence. मैं जो बात कहना चाह रही हूँ या क्वेश्चन करना चाह रही हूँ वो ये है कि यहाँ पे हमने एक बात की पावर की, कि जब किसी के पास भी पावर आ जाती है तो वो बिगड़ जाता है, या लाइक किसी एक को पावर दे देना इतना अच्छा बेनिफिशियल नहीं है। तो मुझे लाइक पर्सनली मुझे ऐसा लगता है, या मैं ऐसा सोचती हूँ कि लाइक पावर जो है वो किसी को अगर मिलती है तो ये एक अच्छे उसमें भी है, क्योंकि पावर ऐसा है कि पावर जो है वो एज अ मैग्निफिकेशन काम करता है, ये मैग्नीफाई करता है कि अगर एक पर्सन बुरा है तो जब उसके पास पावर आएगी तो ही विल बी वर्स, ठीक है। और अगर एक पर्सन अच्छा है और अगर उसके पास पावर आएगी तो वो और मजीद अच्छे काम करेगा। तो इस सेंस में तो फिर पावर किसी एक को देना ये अच्छी बात है ना, कि वो पर्सन अगर अच्छा है और फिर उस एक अच्छे बंदे को पावर चली जाती है। अगर कोई लोग मिलजुल के एक बंदे को ऐसा कैपेबल समझते हैं और उसको पावर हैंड ओवर करते हैं तो वो फिर सबकी बेनिफिशियल उसमें भी काम है। तो जरूरी तो नहीं है ना कि पावर हमेशा हम देखेंगे किसी के पास पावर जा रही है तो वो बुरा ही हो रहा है। Okay, so fine. I mean, if that's what you think, तो देखिए, जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू पावर्स देते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है ना। आप एज अ पीपल यू कैन सेलेक्ट, दैट्स द आइडिया, कि जी हम सारे लोग बैठ के एक बंदा सिलेक्ट कर, and you are free to have whatever system you want or whatever constitution you need to build, और फिर आप कहते हैं कि जी ये हमने अब अपना लीडर तय कर, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर होगा, या आप उसको प्रेसिडेंट कह लें, या खलीफा कह लें, आप उसको बादशाह कह लें, और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है इसके साथ कि 5 साल तक ये हमारे मुल्क का ठेकेदार होगा या हमारी मैनेजमेंट करेगा, या 10 साल के लिए होगा, या जो भी आप पीरियड रखना चाहते हैं, 4 साल के लिए। और इस दौरान इसके पास ये अथॉरिटीज होंगी, और इस दौरान इसके पास ये इसकी पावर पे लिमिट्स होंगी, ये कर सकता है, ये कर सकता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर सेइंग, दिस इज व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड
democracy says. Now, अब ये बंदा प्राइम मिनिस्टर बन जाता, जो अवाम ने चूज किया ना, कॉन्सेप्ट तो यही है। इतने में एक बंदा जो कि ग्रेड 20 का मुलाजिम है, 21 का मुलाजिम है, इसको हम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहते हैं, जो कि एक सरकार का मुलाजिम है, ये रोज लुच तली जा रहा होता है कि जी हम जो है गवर्नमेंट को या लोगों की चॉइस को अंडरमाइन कर रहा हूँ, ठीक है। He's got no legitimate right to do any of this, right? So this is the choice of the people, and he's going to do whatever he's going to do, right? Because, as you said, power has to be given to somebody. But how is that power given to somebody? Is it through the barrel of a gun, or is it through the choice of the people? Because here, a lot of them are sitting together, and a lot of them are consulting in a manner with each other, arguing them, and उसमें अगर थिंकिंग की फैकल्टी हो और ये सब लॉजिकल बात थिंक कर रहे हो और सिर्फ पर्सनल जात बरादरी और उस लेवल पे ना हो। क्योंकि देखिए मसला ये है कि अगर आप जब ये जात बरादरियों पे आ जाते हैं तो फिर ये होगा ना कि जी ये हमारा ये लीडर है और इसका मतलब है हम बाकियों पे जुल्म करें। तो आपके मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है वो जनरली इसलिए, like say for example in Canada, it's not a perfect system. Certainly no systems are perfect, and human evolution is a process जिसमें से हम गुजर रहे हैं और ऐसे। लेकिन इसमें जब तक लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे वो सिस्टम बनता रहेगा, लोगों के राइट्स होंगे, लोगों के ऑब्लिगेशंस होंगे, अपने टैक्सेस देने हैं। तो नो मुझे इस बात पे इतराज नहीं है कि किसी को पावर दी जाए, लेकिन उस पावर की लिमिट्स क्या होंगी और वो क्या लोगों की मर्जी के थ्रू वो पावर आ रही होगी या वो डिक्टेटोरियल पावर होगी, और क्या वो हेरिडिटी पावर होगी, और क्या वो डिविसिव पावर होगी। क्योंकि नेल्सन मैंडेला ने एक बड़ी मजे की बात की थी ना कि जी आप किसी मुल्क को इस तरह जज नहीं करते कि वो अपने इलीट को किस तरह ट्रीट करता है, आप उसको इस तरह जज करते हैं कि वो अपने सबसे लोएस्ट लोगों को किस तरह ट्रीट करता है। तो आप अपने इर्द गिर्द देख लीजिए कि आप अपने लोएस्ट लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, एंड एज अ कल्चर हम कैसे ट्रीट कर रहे हैं। जो घर में काम करने वाली मासी है उसको तो आप अपने साथ मेज पे बिठाना पसंद नहीं करते। So I mean, how as a society or a culture are we? So I agree with part of what you're saying. Somebody has to have that power, but how does that power go over to that person is a very serious question. ठीक है सर, बिल्कुल आपने क्लियर कर दिया। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर, आप बताइए कि अब आपके नियर फ्यूचर में क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? एक तो थिंक सीरीज पे आप काम कर रहे हैं, उसके अलावा मालिक तो एक प्रोडक्ट आ गई 2016 की। अब आपकी कोई इस तरह की मूवी हम एक्सपेक्ट करें या क्या आपके ज़हन में इस वक्त क्या है? मेरे ज़हन में हमेशा वही है जो कि था। I'm a very selfish person and I advocate everybody to be selfish. As I said, answer only to yourself, do whatever makes you feel happy, and live your own life. So I'm in a country, I'm living my life. मैं अगर of the number of things that I've done in life, including a little bit of government, a little bit of civil services, a little bit of writing, directing, arts. Ideally, I would have liked to be a farmer, that I've not done yet. So मैं हमेशा से शौक था कि एक छोटे से जमीन का टुकड़ा उस पे दरख्त लगाऊं, आग बनाऊं, have that independent, that kind of a lifestyle. मेरी कोई बहुत ज्यादा ना कोई फेम की मेरी कोई रिक्वायरमेंट है, ना मेरी कोई पैसे की रिक्वायरमेंट है। गरीब आदमी हूँ, मेहनत करने पे मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो अब जो नेक्स्ट ईयर से मेरा जो प्रोग्राम है, आई वाज एबल टू बाय सम लैंड हियर इन कनाडा, और अगले साल से प्रोग्राम ये है कि उस पर दरख्त लगाएंगे, उस पर एक छोटा घर बनाएंगे, उनको पानी देंगे, एंड आई थिंक आई एम एट अ स्टेज इन लाइफ जहाँ पे और 10 साल शायद थोड़े से हाथ पांव काम करते हैं उसके बाद। सो live through those live through a place that I enjoy, which has lots of flowers and maybe some friends over, and freedom to think, to talk, free of fear. Will I be able to make a film again? I don't think so. I don't have sufficient money to make a film.
again, I don't think I have a commercial market for a film, and वही मैंने कहा कि मेरे पास वो फाइनेंशियल स्पेस नहीं है कि मैं फिल्म बनाऊं, और फिर सारे चूंकि मैं अपनी तरह की फिल्म बनाऊंगा तो जरूरी नहीं है कि वो कमर्शियली बहुत बड़ी सक्सेस हो, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं मजीद ज़ाया कर सकूं. ओके सर. सर, इस प्रोग्राम को कंक्लूड करते हैं, और हम कंक्लूजन अमूमन दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे और आपको एक मुतमईन ज़िंदगी दे, कि चूँकि आपकी तरह का जो थिंकर होता है सॉरी, वो अमूमन इतना खुश नहीं होता, लेकिन इत्मीनान मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान हो, और आप जो है अपनी एक बहुत अच्छी लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं. तो बस इसी दुआ के साथ जो है इसका इख्तिताम करते हैं. आप कुछ? हाँ. Let me add to that, because that जब हम सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे थे तो उसमें एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पोर्शन होता है इंटरव्यू से इमीडिएटली पहले, जब आपने पेपर्स क्लियर कर लिए. तो मुझे याद आया कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में एक सवाल मेरे सामने आया, और उसमें ये लिखा था, इफ यू हैड द ऑप्शन टू रीलिव योर लाइफ, व्हाट चेंजेस वुड यू ब्रिंग. अच्छा, मैं थोड़ी देर उसे देखता रहा, और उसके बाद मुझे समझ नहीं आई, और मैंने उसको नील चेंजेस करके भेज दी. जब हमारा साइकोलॉजिकल इंटरव्यू हुआ, वो मोहतरमा ने अगले दिन मुझसे पूछा, तो उसने कहा कि आशिर, यू सीम टू बी द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द प्लैनेट. सो आपने कहा ना कि राइटर कोई ज्यादा खुश नहीं होते. आई एम द हैप्पीएस्ट मैन ऑन द प्लैनेट, आई सीरियसली एम. तो and thank God to that. So next day she asked me, she said, you seem to be the happiest man on the planet. If you had the option to relive your life any way you wanted, you would live the same life, bring no changes to it. And I said to her, I said, ma'am, I've had my share of tears, I've had my share of laughter, I've had my share of fun and agony, but मेरा वाहिद यह है कि हर सूरत हाल में I always, मैंने सिर्फ अपने आप को जवाब दे रहा. सो मेरे सामने जब भी जिंदगी में वो चॉइसेस आई, वो फोर्क आया कि जी क्या करना है आपने, तो मैंने बगैर फियर और फेवर जो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया. क्योंकि मेरे ख्याल में इस जिंदगी से आप कुछ नहीं लेके जाते, सिर्फ मेमोरीज लेके जाते हैं. You're not going to take any money, you're not going to take anything with you, you're just going to take your memories with you. And those memories will only be good for you if you followed your heart. True to yourself, whatever you honestly believed at that point in time, you did it. Whether it was wrong or right, who cares? You're the judge in the end, right? So, and that's what I would try to tell everybody, develop that thought where you're true to yourself and be happy, because that's the only way you're going to be happy. And that's the sole purpose of life. Thank you so much for having me on the show. Yes, sir. Thank you so much, sir. Okay. Allah Hafiz.